Hello, everybody. So, welcome back. Today, we are going to continue our society series. And in the same foray, I'm going to talk about the secularism and the population related social aspects in this video. And post that, I would be covering rest of the topics in another video, and that would be completing our series of society for UPSC Mains 2024. सबसे पहले सेकुलरिज्म में हम देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है इस चीज़ की, मॉडल्स क्या है सेकुलरिज्म के, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो रिलेटेड हैं सेकुलरिज्म से. कंसेप्ट में देखते हैं हम कि सेकुलरिज्म जो है वो डिफाइन की जाती है एज अ कंसेप्ट वेयर स्टेट एंड पीपल हु हैव मैंडेट टू रिप्रेजेंट द स्टेट आर सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, तो एक स्टार्क डिस्टिंक्शन और आर्म्स लेंथ पॉलिसी जो फॉलो की जाती है बाय द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलरिज्म. इट इज़ डिवाइड ऑफ बोथ इंटर एंड इंट्रा रिलीजियस डिनोमिनेशंस, दैट इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, पैट्रियार्की if exist, then in secularism it is also not practiced. It promotes freedom and equality both within and between the religion. A sphere of politics is separated from a sphere of religion, but nature and extent of separation depends upon the value it intends to promote. That's why this has given rise to different models of secularism in different countries. That is namely positive secularism, negative secularism, Western, Eastern, Oriental secularism. All these are the types of secularism which are there. So US model of secularism. The concept was given by Thomas Jefferson. It has following features. A sphere of politics is separated from a sphere of religion. पहली बात. दूसरी कि state shall not adopt any religion as a state religion. मतलब स्टेट कोई रिलीजन नहीं लेगा, अपना एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिफाइन करेगा. नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिक्स ऑफ रिलीजन ही शी प्रैक्टिसेस. हेंस वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट आर्म्स लेंथ डिस्टेंस between a state and religion, that is the sphere is mutually exclusive. स्कोप क्या है कि there is no scope for state sponsored religious reforms. ठीक है, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, इसलिए कोई स्कोप नहीं है रिफॉर्म्स की. राशनल क्या है? एज पर देम रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर, hence a state neither has the liability nor has the right to interfere in religious matter. Rights in this content, equality, freedom is with respect to individuals. It does not deals with community specific rights, also known as soft secularism. French model of secularism, also known as laicite, policy of laicite. Codified idea was presented under the law of separation between state and church 1905. Concept क्या है कि there also exists separation between a sphere of politics and a sphere of religion. The state neither supports nor discourages any religion until it does not infringe upon the duties of a state and right of their citizen, that is sphere of politics. Rational क्या है इसके बीच कि it is based on the rationale that church was all dominating, hence king and commoner wanted to curtail the authority of church. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया to domesticate religion. Secularization, that is differentiation, privatization and decline in social significance of religion. ठीक है, स्कोप क्या है? Hence due to its commitment to complete separation between state and religion, secularization, that is religion plus secularization, any explicit expression of religious symbols and practices are banned in public sphere, public space, offices, school, etc. Then it is referred as hard secularism, कि आप कोई चिन्ह वगैरह इंसाइनिया भी आप नहीं पहन सकते इन पब्लिक. Indian model of secularism, it is very peculiar. Let's understand this, that स्टेट और रिलीजन के बीच में कैसे यहाँ पे कनेक्शंस हैं, सेपरेशन है, एंड उसके साथ साथ स्टेट के पास स्कोप है टू डू अवे विद द रॉन्ग्स ऑफ एनी रिलीजन. ठीक है, सो स्टेट इज़ अलाउड टू इंटरफेयर, पहली बात है. डिसएग्री विद सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, स्टेट कर सकता है. टू गिव इफेक्ट टू प्रोग्रेसिव वॉइसेस विद इन अ रिलीजन, स्टेट कैन इंटरफेयर, लेकिन फिर भी एक प्रिंसिपल डिस्टेंस रखता है स्टेट.
एग्जाम्पल इंटरफेरेंस का, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ ट्रिपल तलाक, जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू सबरीमाला, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हो सकती हैं. और एनी मोबिलाइजेशन ऑफ मासेज ऑन रिलीजियस लाइन फॉर इलेक्टोरल गेन्स इज प्रोहिबिटेड. ठीक है. Hence, wall of separation is porous, where state can interfere but not religion. That is called principal distance between state and religion. Rational क्या है? Although it appears that India model of secularism was borrowed from West, however, it is rooted that India has unique socio-historic circumstances. For example, religious plural nature of Indian society and the commitment of the leadership to ensure equal respect for all religions. Scope देखते हैं. Based on the idea of principal distance, we can conclude that Indian model of secularism is compatible with the idea of state-sponsored religious reforms. So हमारे secularism में क्या है कि हम state-sponsored religious reforms कर सकते हैं, and that's the very peculiar thing in our kind of secularism. राइट्स क्या है इसमें? इट डील्स विद बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी स्पेसिफिक राइट्स. ठीक है. चैलेंजेस विद फ्रेंच मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. अब फ्रेंच मॉडल के साथ क्या चैलेंजेस हैं और इंडियन मॉडल के साथ क्या है ये देखते हैं. इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज द कंटेम्प्रेरी नेचर ऑफ सोसाइटी विच इज़ मल्टी कल्चरल एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजियस एक्सप्रेशन इज परसीव्ड एज डिनायल ऑफ रिलीजियस राइट्स. दूसरा क्या है कि फॉर मेनी इंडिविजुअल विजन इज नॉट जस्ट मैटर ऑफ फेथ बट ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ. Hence, restricting it to private sphere is not possible completely. Denying the freedom of religious expression undermines the civil liberty. Curtailing and curbing the religious sentiment has backfired, and there has been increased incidences of radicalization. For example, Charlie Hebdo attack. What French can learn from Indian secularism. Ensuring equal respect for all religion and acknowledging religiously plural nature of society could be a thing which French secularism can be amendment through which French secularism can be amended, taking from the Indian secularism. ठीक है. The concept of principal distance that allows the interference with regressive practices can also be taken care by French. Third point is that we have been able to ensure a balance between the freedom of expression and religion by incorporating provision of reasonable restrictions. Ours is positive secularism as it provides enough space for everyone to promote and propagate their religion without infringing upon the rights of other. ठीक है. ये हमारे बेनिफिट्स में भी हम लिख सकते हैं. चलिए अब कंटेम्प्रेरी इशूज़ देखते हैं इसी सेकुलरिज्म पे बेस्ड. पहली की यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ही हॉट टॉपिक है, डिबेटेबल है काफ़ी. इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू ए कॉमन सेट ऑफ लॉज विच गवर्न्स द एरियाज ऑफ पर्सनल मैटर्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बैकग्राउंड. इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स फॉर में हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी देखते हैं. फॉर में क्या पॉइंट्स हैं? इट मे लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट, अच्छी बात है. Uniformity with respect to personal laws, reduce the burden on legal system. Ensure social cohesion and national integration, good. Access to equitable justice, administrative convenience, and it may end vote bank politics. Awareness and assertion of individual rights with respect to personal matters, speedy justice, reduction in law and order disruption, fiscal space for investment in social infrastructure, good. It will realize the provision of Constitution under Article 44. In Uniform Civil Code, laws are based on nationality or scientific temper. Then it can also promote sense of oneness, prevent social evils. Challenges क्या क्या है? It will lead to women empowerment but might be over-exaggerated statements since change in inheritance laws does not brought about the change with respect to owning the assets. ठीक है. It might go against the salad ball theory of multiculturalism. There exists a problem of cultural lag and any change with respect to core beliefs might take time to be accepted. The core beliefs change होने में बहुत time लगती है
इस कारण से जो चेंज है और उसका जो इफेक्ट है वो देखने में बहुत वक्त लगेगा. We do not have a blueprint with respect to what constitutes UCC. Hence, it might generate apprehension among the religious minorities that it may lead to imposition of majority culture. The people do not have emotional intelligence to view UCC from the prism of progress, empowerment, justice. Instead, it is viewed from the lens of religious differences. Due to existing problems such as cultural chauvinism, politicization of religious issue, and lack of education on scientific temper, it might result into retaliation and widening of the existing divide if any decision is made in haste. अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू 21st लॉ कमीशन कंसल्टेशन पेपर ऑन फैमिली लॉ रिफॉर्म्स, इट स्टेटेड द फॉलोइंग थिंग्स. UCC is neither necessary or desirable. ये उस टाइम की बात है. Equality within community is required. Cultural diversity cannot be compromised to the extent that urge for uniformity may thereafter threaten the territorial integrity. The democracies can be established in which there are multicultural things are there. However, efforts should be made to end cultural exclusion, development of complementary identities, and promotion in unity in diversity. National cohesion does not require imposition of common identity but accommodation of diversity. Hence, any decision with respect to UCC should be taken after popular consensus. Therefore, 22nd Law Commission put UCC for public consultation. वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं? इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग UCC इन सिंगल स्टेप, फुट इन द डोर टेक्निक मस्ट बी यूज. मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं. Persuading the respective religious leader to create awareness among the people with respect to what constitutes UCC. First and foremost, prepare a draft, and while it is prepared, all stakeholders need to be involved, and once the draft is prepared, it should be put on public platform for the further feedbacks. Till the time a popular consensus is being made, continuous efforts should be made with respect to individual reforms that could lead to the collective reforms which we are expecting in the near future. At the same time, NGOs, civil societies, cultural platforms should be used to promote inter-religious harmony. अब एक और अच्छी सी टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वर्सेस जुडिशियोपैपिज्म. ठीक है, ये देखते हैं हम. जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है वो इन्वेंट की गई थी बाय 7 जजेस बेंच ऑफ SC इन शिरूर मठ केस 1954, which aims to protect the practices which are essential and internal to the religion, which include rituals, practices, dressing style, and court will decide which practice is essential. However, who will decide the essentiality is a contested issue, as seen in various judgments by Supreme Court itself. Judicio-papism is over interference of judiciary in religious matters. ठीक है, ये भी हमने देख ली. Example, Rajasthan High Court put a ban on Santhana practice by stating that it is not an essential practice without any consultation with Jain expert, but it is lifted by SC and said this is act of judicio-papism. There have been various judgments with respect to doctrine of essentiality. Anant Marga case में related to performing tandav on road, and court has said it is not essential practice. Article 25 says there is reasonable restriction subjected to public order. Ismail Faruqi case में court has said that offering namaz is essential practice, but offering namaz in mosque is not essential. Okay. Church of God versus KKR Majestic Colony case. Court said that offering prayer in church is essential practice, but offering prayer in loudspeaker is not essential. सबरीमाला केस में और एक और आर्गुमेंट आई फेवर में और उसके अगेंस्ट में, वो भी देखते हैं कि बैनिंग एंट्री इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. ठीक है. इंडिविजुअल राइट्स कैन नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द मॉब. Patriarchy in the religion cannot supersede the freedom to practice religion. That is, Article 25 is greater than patriarchy. Exclusion based on psychological factors is unconstitutional.
Prohibition is a form of untouchability which is under Article 17 as per doctrine of living tree. Argument against: religious communities should decide what constitutes essential religious practices. Diversity should not be confused with discrimination. Different temples have different customs. So, what is observed in Sabrimala is not discrimination but restriction according to the practices of the particular temple. Prohibition is not an act of patriarchy, but there exists a historical origin where restriction is due to celebrate nature of God. In pluralistic society like India, entertaining PILs challenging various religious practices can cause damage to constitutional provision and multicultural fabric of India. अब इसके बाद हम देखेंगे जो पॉपुलेशन और उसके एसोसिएटेड जो इश्यूज हैं वो हम देखते हैं. तो पॉपुलेशन के साथ तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि एक लायबिलिटी है या एक एसेट है. सबसे पहली डिबेट हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे. देन हम डेमोग्राफी पे जाएंगे जहाँ पे उसकी कंसेप्ट देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, फॉर्मल और सोशल. द डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे कि वो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए और कैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजास्टर बनने से पहले बचा सकते हैं. फिर फैक्टर्स विच अफेक्ट पॉपुलेशन चेंज, दैट इज़ फर्टिलिटी, मॉर्टैलिटी, माइग्रेशन, इन सारी चीज़ों पे देखेंगे. देन वल्नरेबल सेक्शन के बारे में देखेंगे, नेमली चाइल्ड, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर, फिजिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया. चलिए शुरू करते हैं कि डिबेट विथ रिस्पेक्ट टू हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. लायबिलिटी, अभी कैसा लायबिलिटी है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन बनाएगा ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड्स होंगे, लैक ऑफ इक्विटेबल एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन होगा, तो इंक्रीज़ कर देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, डाइल्यूट कर देगा सोशल कैपिटल को, थ्रेट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेगेटिवली इम्पैक्ट सोशल इंडिकेटर्स. However, population growth as a liability is one-sided accentuation of the reality. If transferred into human capital, it will become an asset. अभी कैसे? Human capital, it refers to knowledge, skill, health accumulated by the individual during his life, which enables him to realize his potential and become the productive asset for the nation. ये human capital की definition हुई. अब sources of human capital formation क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात कि investment in social infra, that is education, health, skill development. Secondly, migration in search of job opportunity. Third, expenditure made on information regarding job market. ठीक है. Prospects of human capital formation. अब कैसे कैसे कर सकते हैं हम human capital formation इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे या फैमिली लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे देखते हैं. पहला इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं. अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ क्रिएट कीजिए. वन इज एबल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल. गुड. Sense of satisfaction as acting as a productive asset, reduction in self-alienation and cognitive development plus happiness comes in the way. Then family level पे, increase in standard of living, good. Development of harmonious interpersonal relationship, reduction in vulnerability of family with respect to shocks and disaster, good. Societal level पे देखते हैं, societal cohesion होगा, social capital strengthen होगी, trust in institutional will. Human capital is required to further produce high-skilled training professionals. With increased skills, specialization होगा, economic interdependency आएगी और increase करेगा social solidarity को. ठीक है. नेशनल लेवल पे अगर हम पोटेंशियल क्रिएट करें किसी में इनोवेशन की तो वो हो सकती है. क्रिएट करें स्कोप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट particularly. With development of human capital, better utilization of physical capital could be possible. Overall economic growth के लिए हम क्या करेंगे? Overall performance with respect to social indicators will improve. Reduction in poverty, increase in productivity. These are the things which comes after we change the liability into human capital. अब डेमोग्राफी के बारे में देखते हैं. Demo means population and graphy means characteristics, that is structure and compositions. It refers to trends and processes which deals with the structure of composition of the population.
Example: birth rate, death rate, migration, sex ratio, etc. Types of demography देखते हैं. Formal, it refers to statistical inquiry into various aspects of the population, that is infant mortality, sex ratio, child sex ratio, etc. Social देखते हैं. It refers to social analysis of statistical inquiry. Example: causes, implication of the data. Then demographic dividend की बात करते हैं. Currently, the working age population, that is 18 to 59 years, is 62.5%, expected to increase to 65% by 2036. So, demographic dividend refers to the economic growth potential generated due to bulge in working age population. ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियल जो जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द bulge in working age population is called as demographic dividend. How it create potential for economic growth. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन से अगर ज़्यादा तो ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा सेविंग होगा, ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा, ज़्यादा डोमेस्टिक डिमांड होगी और वो इकोनॉमिक बूम की ओर लेके जाएगी. ठीक है, more population in working age plus fertility rate is declining, availability to potential for female labor force participation, तो वो भी इंक्रीज करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को. विथ इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन क्या क्या होता है? Swelling of labor force will create pressure on government for opportunities. With increase in revenue, decline in expenditure of government with respect to dependent population. तीन चीज़ें मेनली होती हैं. अब स्वेलिंग ऑफ लेबर फोर्स क्या होगा? ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, मोर नंबर ऑफ लेबर आएंगे, चीप लेबर होगा, कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंपनीज इंक्रीज करेगी. फिर अगर क्रिएट करेगा प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फॉर अपॉर्चुनिटी तो क्या होगा? क्रिएट अ ग्राउंड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. ठीक है, गवर्नमेंट विल डू द नेसेसरी स्टेप्स. और अगर रेवेन्यू बढ़ेगी गवर्नमेंट की तो जनरेट करेगा फिजिकल स्पेस फॉर गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन सोशल capital in per se. So the working age group is also a prime period for saving resources, hence the overall savings will increase. It might result into shift towards middle class society, which will create potential for economic growth as it is an aspirational class. लेकिन however, the bulge in working age population is only a necessary condition but not a sufficient condition. ठीक है, to ensure economic growth, because it depends upon the quality of workforce. Economic growth होने के लिए quality of workforce बहुत important है. It depends upon what extent workforce is healthy, educated, skilled. The government has taken initiatives such as Ayushman Bharat, Poshan Abhiyan, Skill India Mission, Startup India, Stand Up India, etc. इसके साथ साथ दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्क फोर्स. अगर वर्क फोर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं हुई तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के या ह्यूमन कैपिटल का क्या करेंगे हम? द फोकस शुड बी ऑन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जाम्पल प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर FLFP, रेगुलर स्किल अपग्रेडेशन टू इंक्रीज द डिजायरेबिलिटी ऑफ वर्कर्स इन लेबर मार्केट. एजुकेशनल कंटेंट शुड बी मार्केट ड्रिवन, making labor laws flexible to reduce the incidences of industries going for labor substitution technology, creating the culture of a startup by enhancing their utility through media, investing in gig economy could be another thing. Factors which affect population change. अब हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो फर्टिलिटी सबसे बड़ी फैक्टर है पहली, जिसमें पर्सन के एबिलिटी जो कि वो कंसीव कर सकते हैं चिल्ड्रन को, उसको फर्टिलिटी कहते हैं. इसकी कंसेप्ट देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, आर्गूमेंट्स देखेंगे टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में. फर्टिलिटी रेफर्स टू द एक्चुअल बेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन इन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दैट इज़ 15 to 49 ईयर्स. स्टेटस क्या है? करंटली इंडियाज़ फर्टिलिटी रेट इज़ 2 अकॉर्डिंग टू NFHS 5. रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? 2.1 होता है. वो क्या फर्टिलिटी रेट होती है? विच इज़ द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट.
रीजनल वेरिएशन, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर में बहुत ज़्यादा है नेशनल एवरेज से, वाइल वेस्ट प्लेसेस पे नेशनल एवरेज से कम है। कॉजेज़ क्या है हाई फर्टिलिटी रेट के? पहला, लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लो लेवल ऑफ लिटरेसी। कंपैरिजन बिटवीन यूपी एंड केरला अगर देखते हैं तो यूपी की लिटरेसी रेट 67% है और एंटीनेटल केयर में ओनली 25% ऑफ वुमेन हैव एक्सेस। और केरला में यूनिवर्सलाइजेशन हो गया लिटरेसी का और एंटीनेटल केयर का, बहुत ही हाई परसेंटेज है वहाँ पे। डिक्लाइन इन डेथ रेट इज़ हाई एज कम्पेयर टू बर्थ रेट ड्यू टू एन इंक्रीज इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ इंफ्रा। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट results in a high fundamental right. Social factors such as son meta preference, that is, keep on having child until you have a desirable male child, early marriage, low status of women, lack of awareness with respect to reproductive health. Religious ideologies which do not approve of medical termination of pregnancy or adoption of family planning methods could be another cause. Poverty, more number of children means more working hands. ये thought process. Lack of forays, that is availability, accessibility, affordability and awareness with respect to family planning methods. Universalization of heterosexual norms of marriage with the prime purpose of reproduction. ठीक है? Prevalence of joint family system, that is every child will be taken care of in joint family, and this notion tempts the people to produce more. With the desire to maintain the purity of lineage, there are increased incidences of surrogacy, and the culture of adoption is yet not has been an accepted phenomenon. ठीक है? अब टू चाइल्ड पॉलिसी की बात करते हैं. With respect to two child policy क्या है कि we do not have any national policy on with respect to a specific number of children. However, in the post-independence period, we had adopted various family planning measures. However, they were voluntary. However, in some states such as Assam, Meghalaya, Odisha, Rajasthan, etc., have two-child norm in context of government jobs or elected positions. Arguments in favor, arguments in against. देखते हैं हम फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं. Due to high population, it limits the government ability to transform resources into capital. पहली चीज़, high population growth results into decline in standard of living. Ecological degradation threatens the opportunity for demographic dividend and the problem of maternal depletion syndrome, that is malnutrition experienced by women due to early and frequent pregnancies. One of the reasons for high fertility rate is lack of awareness of benefits of small families. Hence, all these above mentioned issues can be addressed with the emergence of a two-child policy. Arguments in against. The total fundamental right has already reduced below the fertility rate has already reduced below the replacement level. India already has a very high rate of tubectomy, that is 37% of women have gone for sterilization, and this may increase further. Son selective abortion and infanticide due to the desire for the male child. Destabilization of the family as an institution, increased divorces, desertion of wife, abandonment of children, etc. are another phenomenon. And it will be a coercive policy which will be in contravention to Article 21 of the Constitution. The negative implication of China's world child policy, such as skewed sex ratio, violence against women, and aging population, a fast declining workforce, etc., can be another cause that we should not adopt the two-child policy now. Way forward क्या हो सकता है? People should decide on voluntary basis. Hence, the strategy should be choice-based, not mandatory or coercive. Enhancing the levels of awareness about the benefits of adopting family planning method. Investment in education, as education is the best contraceptive. Focus on making women an agency of change, according to Amartya Sen. Investing in women's education, health and reproductive rights will automatically reduce infant mortality rate, child mortality rate, etc.
ensure economic growth. For example, it is estimated that if India pulls 20% of its population among the poor people out of poverty, the fertility rate would decline to 1.9%. There is suggestion to increase the age of marriage as it will create more maturity among couples and informed decision making with respect to reproductive health. According to MS Swaminathan, any effort to control population via monetary incentive should be discontinued. Instead, focus should be on behavioral change rather than monetary change. For example, reducing taboos related to the use of contraceptives. अब नेक्स्ट फैक्टर है माइग्रेशन. माइग्रेशन देखते हैं, दैट इज इसके कंसेप्ट देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, कॉजेज, कंसिक्वेंसेज और वे फॉरवर्ड देखते हैं. ठीक है. कंसेप्ट क्या है? माइग्रेशन रेफर्स टू स्पेशियल मोबिलिटी फ्रॉम वन जियोग्राफिकल यूनिट टू अनदर which involves change in residence for considerable period of time. Stats क्या है? According to census 2011, 450 million internal migrants in India is there. 37% of total population are migrants. It's 68% of the migrants are women. That is feminization of marriage. मतलब शादी के बाद बहुएं मूव कर जाती है अपने सासरे में due to marriage. According to Migration in India report, between July 2020 to June 2021, there was 28.9% of migrants people, or 47.9% female migrants out of 100 female, and 10.7% male migrants out of 100 male are there. Note the report mentioned about the temporary visitor who constituted 0.7% of India's population and is defined as those who arrived in the household after March 2020 and stayed for more than 1 or 15 days but less than 6 months. The main source reason for migration in India are UP, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, etc. and also Jammu and Kashmir. The main destination reasons are Delhi, Maharashtra, Gujarat, Karnataka in search of better opportunity of job, of course. According to Census 2011, migrants are defined as those individuals whose place of residence is different from their place of birth or place of last residence. टाइप्स देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी इंटेंशन टू कमिंग बैक, तो उसको परमानेंट माइग्रेशन बोल देते हैं. सोर्स रीजन से बट ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सारी चीज़ों से वो डेस्टिनेशन रीजन पे चले जाते हैं. एंड पीपल आर फोर्स टू कम बैक टू सोर्स रीजन. अगर वहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो गई, फिर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, मान लो बड़े शहर में चले गए तो, और डिक्लाइन होगी वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, उनके पास कम पैसे हो गए, तो इस कारण से वो वापस चले जाते हैं अपने सोर्स रीजन पे. तो इसको सेमी परमानेंट माइग्रेशन कहते हैं. टेम्परेरी माइग्रेशन क्या है? सोर्स से हम जाएंगे, हमें कोई रीजन मिला, उसकी तरफ गए, वॉलंटरी कम बैक हमारा हो जाएगा जैसे ही हमारा पर्पस फुलफिल होगा. जैसे 1 या 2 साल के लिए कोई कोर्स करने जाता है, उसे टेम्परेरी माइग्रेशन बोलते हैं. In source area, job opportunities are not all the year round, so there exists a lean region in which people move to destination areas for different employment opportunity, and then they voluntarily come back to the source region after the fulfillment of their expectations. Capturing the data of seasonal migrants has been a challenging issue. However, Economic Survey 2017 did mention that there are 139 million seasonal migrants in India. कॉजेज ऑफ माइग्रेशन देखते हैं. अब आप पुश फैक्टर, पुल फैक्टर करके हमने डिफाइन किया है इसे. इकोनॉमिक कॉज, पुल फैक्टर, डेस्टिनेशन पे पुल फैक्टर लगता है, डेस्टिनेशन पुल करता है. पुल क्या फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? ग्लोबलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, एक्सेस टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एटसेट्रा. पुश फैक्टर, सोर्स रीजन से उसे वहाँ से धकेला जा रहा है. एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, lack of alternative employment opportunity, low remunerative nature of agriculture, lack of basic infra in terms of health and educational skill, pull back from source. ठीक है. Development of opportunity in source areas due to government interventions or development of counter migrants, development of gig economy to reduce the traffic of people of Delhi. The efforts are made to develop Raipur and Chandigarh, Jaipur and Chandigarh.
Similarly, to reduce the pressure on Mumbai, Pune, and Nashik, people are developing the other areas. पुशबैक देखते हैं, डेस्टिनेशन पे लगता है ये ओवर क्राउडिंग कंजेशन के कारण, लैक ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाई कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ इंफ्रा। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स देखेंगे, अब इनके भी पुल बैक पुशबैक फैक्टर्स होते हैं। पुल बैक फैमिली रीयूनिफिकेशन के कारण, फीलिंग ऑफ नेटिविज्म के कारण, यानी घर की याद आ रही है। पुश डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सेस टू रिसोर्सेज बेस्ड ऑन प्रीमोडियल आइडेंटिटीज, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, हाई फोर्सेस बाय पैट्रियार्की। पुल क्या क्या हो सकता है? अर्बनिज्म हो, हेट्रोजेनिटी हो, एनोनिमिटी हो, इंडिविजुअलिज्म इंक्रीज कर जाए तो मोर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ रेस्पेक्टिव ऑफ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स, ठीक है। स्ट्रेंथन सोशल कैपिटल, टॉलरेंस, एकोमोडेशन, प्लूरलिज्म एटसेट्रा और मैरिज। पुश बैक लैक ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन, ghettoization, replication of inequalities present in some area, increase incidences of social conflicts based on primordial identities due to anonymity, growing incidences of isolation and alienation के कारण वापस आ जाए। पॉलिटिकल कॉजेज के पुश एंड पुल देख लेते हैं। पुश क्या क्या हो सकता है? डेवलपमेंट लेड डिस्प्लेसमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, lack of proper implementation of government policies and schemes, lack of opportunities for political participation and state-led persecution, जैसे तमिलनाडु में बिहारियों को तंग किया गया एटसेट्रा। पुल गुड गवर्नेंस, political freedom, safety and security, increased opportunity and of political participation and association। pushback क्या हो सकता है? son of soil theory। pullback क्या हो सकता है? like strengthening of local governments, change in political leadership. Internal migration is not only influenced by pattern of development but also the social structure of the society. In this context, we can discuss different causes of migration in India using these only causes which I have explained earlier. अब consequences of migration क्या क्या हैं? सोर्स रीजन के लिए क्या क्या consequences हो सकता है? Change in demography, chances of skewed sex ratio, ब्रेन ड्रेन हो जाए वहाँ से, फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो जाए, घोस्ट हेमलेट्स लाइक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इन रूरल एरिया लेड टू लेस इंसेंटिव ऑफ गवर्नमेंट, और वहाँ पे वो लोग को छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को, उनके डिमांड्स को कभी फुलफिल नहीं किया जाता, इसलिए छोटे छोटे कस्बे बन जाते हैं जिनके कोई भी जान पहचान या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रह जाती है, उसे घोस्ट हेलमेट कहते हैं, हेमलेट्स कहते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होगा? लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, if it draws upon surplus labor then there exists a win-win situation. Benefits of remittances हो सकते हैं, it provides opportunity for government to invest sources for the development of reduced population. Demography पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Migration changes the demography of the region, especially if it is male specific out migration. Decline in birth rate, increase in dependent population, feminization of workforce और इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ चाइल्ड लेबर, क्योंकि सारे मर्द तो बाहर चले गए, तो सारी चीज़ें हो सकती है ये। सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स क्या है? माइग्रेशन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज। एग्जाम्पल, डिफ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज सच एज फैमिली प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज कुड बी इंक्रीजिंग। द एब्सेंस ऑफ मेल मेंबर फॉर अ लॉन्ग पीरियड माइट इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन फैमिली in absence of that man. Disintegration of joint family could happen. Political impacts देख लेते हैं. Due to reduced population, although it creates the potential for efficient public delivery, there exists diffusion of responsibility by political leadership, जिसकी मैंने बात की थी, जो घोस्ट हेमलेट्स बन जाते हैं, इसी कॉज की वजह से बन जाएंगे. डेस्टिनेशन वीज़न के लिए क्या क्या इफेक्ट होगा, डिफरेंट तरीके के वो देख लेते हैं. The migration of people from different culture give rise to cosmopolitan culture of that area. Broadening of mental horizon, increased in social tolerance, promotion in unity in diversity, etc. Migration are perceived to take away the jobs of local, compete for scarce resources, which gives rise to feeling of relative deprivation.
So it will lead to increased incidences of crime against the migrants by the residents of that area. Increased incidence of crime हो गई. Limited resources plus high cost of living can lead to slum proliferation in that area. तो स्लम proliferation हो सकता है. उसके बाद it also creates ground for regional politics. Politics of nativism or son of soil. Skewed sex ratio हो सकती है in case of male specific migration. Failure of state administration to ensure good governance. Inter-community conflicts will also increase. अब इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेंट देख ले. पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या है, ये सब थोड़ा देखना जरूरी है. कि पॉजिटिव क्या है, स्ट्रेंथन करता है सोशल कैपिटल को, इंक्रीज करता है सोशल टॉलरेंस को, अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल मोबिलिटी, ओपन टू इनोवेशन, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है. नेगेटिव क्या है, माइग्रेंट्स आर ऑफन रिड्यूस टू बीइंग विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. पहली चीज़, देयर एग्जिस्ट अ सिचुएशन और प्रॉब्लम वेयर अ पर्सन कैन नॉट अडॉप्ट टू द लाइफ स्टाइल ऑफ द डेस्टिनेशन एरिया, neither is able to completely detach from the traditional value system, so it creates conflict with respect to cultural identities which a person embodies in his or her own persona. Migrants may become victims to the wave of westernization, which may lead to Sanskritization of an unsustainable lifestyle. And then, devoid of skills, information, and bargaining power, migrants are often caught in exploitative labor arrangements. Lack of social security benefits in the destination area might lead to the minimum wages, poor work condition, etc. अब और भी negatives देख लेते हैं कि there exists a constant threat of displacement, eviction and poor health. Lack of proper identification and documentation creates ground for political exclusion. According to Census 2011, 57% of female migrants and 27% of male migrants are illiterate. Almost 80% of children of seasonal migrants do not have access to education, and 40% of them have experienced abuse. Hardship further magnifies when the state boundaries are crossed. There exists problem of intergenerational transmission of poverty due to this migration. In the absence of credible data, migrants often remain out of the bounds of government and civil society. Due to the above mentioned point, we observe that migrants are often subjected to social, political, economic exclusion, hence they might be termed as ghost citizens of our country. Our government has made some efforts on the basis of food security, health, social security, legislative mechanism, employment and livelihood opportunities, which could be easily completed using the current affairs resources which we generally follow. सो अब देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. टू मेन स्ट्रीम द कंसर्न्स ऑफ माइग्रेंट्स वाइल मेकिंग नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स इज essential thing which we need to do it in this hour. Secondly, priorities implementation of existing laws. Sensitization and training of the policy makers, local government officials, employees regarding the obstacle faced by migrants. Revise the design of census and service to collect data and point out the migrants. Creation of a special migrant labor cells in every state labor department. Conduct a detailed nationwide mapping of internal migration. Encourage the state level research institution to develop the state migration profile. Encourage or develop the capacity of panchayat to maintain the database of migrant workers. Create inter-district and inter-state coordination committees to jointly plan institutional arrangement for effective service delivery. The politicization of migration needs to be checked. Development of source area to prevent rapid and skewed migration. नेक्स्ट अब वल्नरेबल सेक्शन के बारे में हम देखेंगे, फिर ट्रांसजेंडर्स फॉलोड बाय फिजिकली डिसेबल्ड पीपल एंड अदर्स. तो वल्नरेबल सेक्शन में क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD सबसे पहले देखते हैं. कंसेप्ट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, इश्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है. इस बेसिस पे हम इस टॉपिक को देखेंगे. Definition: lack of ability to perform an activity which is otherwise considered normal could be called as, and that person could be called as person with disability. It is negatively connoted term and is often in context of developing underdeveloped nations. The
term to be used should be differently abled. The term disabled draws attention towards a public perception of disability. That is, it is a retribution of past karma for which there is no respite. Poverty vis-a-vis disabled. देखते हैं हम इस पे डिसेबल्ड के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है. सबसे पहले तो लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, लिमिटेड एक्सेस टू स्किल डेवलपमेंट, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल पार्टिसिपेशंस, लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटीज़. सो वो कन्फाइंड रहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स में. फिर पॉवर्टी बढ़ती है. फिर वो एक और चीज़ बढ़ाती है जैसे लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ नेबरहुड, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ lack of access to quality health infrastructure, lack of early identification of interventions, high probability of being victim of occupational health hazard, safety equipment not provided, etc. फिर ये reinforce करती है disability को. Definition of PWD. It refers to long-term physical, mental, intellectual impairment which in interaction with the barriers hinders full and effective participation in the society. Stats क्या है? According to Census 2011, 2.21% of population are PWD. According to Council of Social Development report, 56% of PWD are men, 44% of PWD women, 58% of PWD literate, 1/3 of child with disability out of school, 36% of PWD are workers, 69% of PWD are रूरल एरियाज. अब इशूज़ क्या है PWD की? लैक ऑफ क्रेडिबल डेटा ड्यू टू एम्बिग्विटी ओवर द डेफिनेशन ऑफ PWD. Census 2011 collected data as per PWD Act 1998, which includes only some types of disabilities, but it was amended in 2016 and now disability is almost 21 types. Data is captured based on household survey and due to stigma associated especially with the mental ability, which results into problem of underreporting. Lack of adequate policy making, lack of infra accessing different resources. अभी tactile paths वगैरह बनाए जाने लगे हैं. Problem of public perception with respect to disability. There exists attitude of sympathy, apathy, mockery, ridiculing the disabled are also there. There also exists stereotype with respect to PWD that they are unhealthy, they lead a low quality life. Lack of access to subsidized aid and assistive technology, lack of timely identification and intervention during pregnancy. Women should take care of and test of our incoming baby to know disability should be there. Lack of political representation of PWD denies them platform by assertion of their rights. Suffering from triple jeopardy, that is disability, stigmatization, poverty. There also exists problem of intersectionality, like a girl with disability is more vulnerable as compared to other. Similarly, poor person versus rich. PWD Act, United Nations Convention right के in line है. ये aims to encourage PWD friendly workplace. प्रोविजन क्या है? एक्ट डिफाइन करता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, रिस्ट्रिक्शन ऑन बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी इज नॉट अलाउड विथ रिस्पेक्ट टू सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल राइट्स. Number of disability have increased from 7 to 21. That is, it has increased power to add more disabilities. Concept of benchmark disability, at least 40% of disability under the act होगा तभी benchmark disability होगा. रिजर्वेशन अंडर एक्ट, हायर एजुकेशन 8%, गवर्नमेंट जॉब्स में 4%. स्पेशल प्रोविजन फॉर चाइल्ड, राइट टू फ्री एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. सेंट्रल प्लस स्टेट एडवाइजरी बॉडी इनके लिए बनाई गई टू सर्व एज एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी. प्रोविजन फॉर पेनाल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट PWD. प्रोविजन फॉर स्पेशल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑफ राइट्स. इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 to 6 months और 10,000 का फ़ाइन भी लग सकता है. सब्सिक्वेंट अगर करेंगे तो 2 साल का जेल हो जाएगा, 50,000 का फ़ाइन या 5 लाख का फ़ाइन लग सकता है. इंसल्ट कीजिएगा या मॉलेस्ट कीजिएगा PWD को 6 महीना से 5 साल तक का जेल और फाइन हो सकता है. इट हैज़ ब्रॉट प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स अंडर इट्स एम्बिट टू.
नेशनल प्लस स्टेट लेवल फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। अब एनालिसिस देखते हैं इसकी। आइए एनालिसिस देखते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ कंसेप्शन दैट डिस्क्रिमिनेशन विल बी allowed if it is a proportionate means of achieving a legitimate goal। ठीक है। The ambit of disability has increased from 7 to 21, which has made the act comprehensive and inclusive. The concept of benchmark disability has been criticized due to its subjectivity and scope of misuse. The clause of 4% reservation in government job is less as compared to the requirement of differently abled people। लेकिन अभी मिसयूज़ की जो मैंने बात की उस पर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली चल रहा है। वो कुछ IAS हैं जिन्होंने PWD सर्टिफिकेट लगा के IAS का जॉब लिया है, एंड दैट्स सो रिडिकुलस एंड दैट्स सो अनफेयर टू द people who are so well qualified and so well deserving and sitting outside the commission. That's completely unacceptable at this moment, and we should completely debar those person from using these kind of fake certificates and not undergoing the legal procedure which are there in the society and the system. So आगे देखते हैं। Extending the ambit of right to education up to 18 years for child with disability could be a welcome step. Although there exists provision for advisory body which will be apex policy making body, but it does not hold much authority. The clause for having special courts for speed disposal of cases is a welcome step. ठीक है। However, there is a lack of provision with respect to attitudinal change to ensure political representation of person with disability, and there is a lack of clarity with respect to management of funds. The Act focuses upon creating an accessible and enabling environment by incorporating both public and private establishments as well. अब हम देखेंगे कि और वे फॉरवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। Identification of beneficiary through social mapping and credible data collection should be there so that nobody could misuse it. Ensuring sensitization of all the stakeholders to ensure better implementation and formation of policies। ठीक है। Provide representation to PWD in decision making bodies. Promote inclusive and accessible infrastructure। FICCI idea of accessibility index could be a welcome step. Promote inclusive education without any labeling। ठीक है। Ensure the availability of subsidized aid equipment and adaptive technology to every PWD person. A special incentive to the private sector to create employment opportunities for PWD. Then promoting entrepreneurship culture through hand holding. Attitudinal change towards the PWD through cinema, social media, and various reinforcement encouraging things like Paralympics, etc. A strict implementation of existing provision and proper evaluation to plug in the loopholes. Then, lastly, we can do early identification and detection of preventable disabilities, and we can act very early in curing all these things and mainstreaming all those problems and the persons who are associated with it. So that's it for this video. In the next video, I will be talking about the transgender and other vulnerable sections, followed by some basic concepts which are there in society syllabus, and that would end our society syllabus for mains 2024. Thank you so much. See you in the next video.